this new tutorial. This is the third part of the forms of the government. आप सबका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में और ये हमारा थर्ड पार्ट है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का. Before this I have already covered two other forms of government and the link to those tutorials you'll find in the description box below. इसके पहले मैंने और दो पार्ट ऑलरेडी कवर किए हैं और उन दोनों पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो फिर चलिए शुरू करते हैं द थर्ड पार्ट ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. एंड हियर वी हैव oligarchy as another form of the government. Well, it is a government in which control is exercised by a small group of individuals whose authority generally is based on wealth and power. So this form of a government revolves around wealth and power. So therefore this form of a government is controlled by a small group of individuals, and this small group of individuals control the authority of the government, controls the government by and large. So they do this through wealth or power, and such kind of a government is called oligarchy. Oligarchy जो सरकार बनती है, ये सरकार कुछ छोटे ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल के कारण बनती है और ये इंडिविजुअल जो होते हैं ये जनरली उनकी जो अथॉरिटी है, उनकी जो पावर है, ये बेस्ड अपॉन वेल्थ और पावर के ऊपर होती है. मतलब जिसके पास ज़्यादा वेल्थ रहेगी और जिसके पास वो इकोनॉमिक पावर रहेगा वो ऐसी सरकार बनाएगा और उस सरकार को कंट्रोल करेगा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट ओलिगार्की जो सरकार है ये सरकार स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की होती है और ये इंडिविजुअल अमूमन बहुत वेल्थी होती है और उनके पास पावर रहता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट oligarchy. It is a government in which control is exercised by a small group of individuals whose authority generally is based upon wealth and power. So next we have is republic. Well, it is a representative democracy in which the people elect their deputies, that is representatives, not the people themselves, but vote on legislations. So when we talk about republic, it is basically a representative form of a democracy where people elect their representatives, people elect their members, people elect their individuals who represent the people themselves in the assembly, and the vote is carried out universally based on universal principle of adulthood. So anybody who is above 18 years of age will have the power to cast their vote. They will cast their representative from their constituency, and that individual will later going to represent the constituency in the government, and therefore we have something called republic, where it is a representative form of a democracy because people elect their representative in the house. रिपब्लिक एक ऐसी सरकार है जहाँ पर ये लोगों की सरकार होती है. ये जो नुमाइंदे होते हैं या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये लोग उनको चुनकर उनको वहाँ पर भेजते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वो रिप्रेजेंटेटिव अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी कुछ उनके हालात है, जो भी कुछ उनके इश्यूज़ है, वो वहाँ पर पुट फॉरवर्ड करते हैं. और इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. एंड देयरफॉर रिपब्लिक becomes one of the most important form of a government. एग्जाम्पल यहाँ पर इंडिया है. हमारा जो रिपब्लिक सिस्टम है ये ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और बाद में वही रिप्रेजेंटेटिव
बाकी सब रिप्रेजेंटेटिव को मिला के एक सरकार बनती है और ये रिप्रेजेंटेटिव हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट रिपब्लिक सिस्टम. नेक्स्ट वी हैव इज मेरिटोक्रेसी. वेल, इट इज अ गवर्नमेंट by the most skilled or talented people or leaders, and leaders are chosen because they have demonstrated that they are the best at something. So meritocracy is a government where you give importance to the talent, where you give importance to the skilled people, and anybody who has this skilled and a talent to get the work done, then they becomes a part of this government. In fact, even their leaders are being chosen only because they have these qualities of skilled or a talented personality, and they are very good in certain areas, and therefore they are the best at something. And the best example for such meritocracy is once given by Plato. Plato, in his a concept of society or a concept of a government, talks about the meritocracy, that if state starts selecting people on their merits, then obviously we'll have the better state. Anyways, in contemporary world we don't have a government where merits are being given by and large, but except some countries, example Switzerland, where meritocracy is also one of the most important aspects of their government, and they wish to have people with some skill or talent to govern the people, and therefore meritocracy becomes one of the most important form of government. मेरिटोक्रेसी जो सिस्टम है, यहाँ पर जो सरकार बनती है, ये सरकार उन चुने गिने लोगों से ही बनती है जो स्किल्ड होते हैं, जिनके पास कुछ टैलेंट रहता है, क्योंकि टैलेंट और स्किल ही लोगों को अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बना सकता है. और उनके जो लीडर्स को वो जो चुनते हैं इस मेरिटोक्रेसी में, उन लीडरों के पास भी ऐसे कुछ टैलेंट या फिर स्किल्ड होने बहुत ज़रूरी है, और उनको ये स्किल्ड या टैलेंट लोगों को दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी जाके ऐसे लीडर चूज़ कर सकते हैं. सो बेसिकली मेरिटोक्रेसी जो सरकार होती है, ये स्किल्ड लोगों की सरकार होती है, बेस्ड ऑन स्किल्ड एंड टैलेंट, और जिनके पास टैलेंट रहेगा, जिनके पास स्किल्ड रहेगा, वही लोग इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं. एंड द एग्जाम्पल यहाँ पर सिर्फ एक ही मेरे नज़र में आता है, और वो है प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गवर्नमेंट, जहाँ पर वो बोलते हैं कि स्टेट शुड ऑलवेज प्रमोट पीपल विथ लॉट ऑफ स्किल्ड एंड टैलेंट. स्टेट को लोगों को ये टैलेंट और स्किल्ड डेवलप करने में हेल्प करना चाहिए, और जो भी इंसान एडमिनिस्ट्रेशन जानता है, सीखा है, समझता है, वैसे ही लोगों को सिस्टम में लेना चाहिए. सो दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाई मेरिटोक्रेसी बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट subject. Next we have is diarchy. Well, it is a government by two people. So like diarchy, we also can talk about triarchy, pentarchy, septarchy, and etc etc etc. Well, the specific numbers of people have equal power in government decision. So when we talk about diarchy, then it is basically a two form of a government, or a two people form of a government, where the entire government is controlled by two people. And this is just a theory to understand that there might be or there may be some sort of government like diarchy. As far as my information is concerned, I have not seen a government controlled by two people, but yes, historically we have seen two strong individuals who had a control on the government, even in India for that matter. So this is all about diarchy, where the government is controlled by two people. डायरकी का जो सिस्टम है यहाँ पर बहुत सिंपल सिस्टम है कि ये सरकार दो लोगों की सरकार होती है, दो पावरफुल लीडर्स कंट्रोल करते हैं पूरी सरकार को, और जो पावर है, जो स्टेट का जो पावर है, वो इन दोनों के आसपास ही घूमता रहता है. और
एग्जाम्पल्स बहुत है हमारे दुनिया में जहाँ पर दो पावरफुल इंसान सरकार चलाते हैं या फिर देश चलाते हैं। इंडिया में भी एग्जाम्पल है, और दिस इज़ ऑल अबाउट द डायरकी, विच मीन्स द गवर्नमेंट बाय टू मोस्ट powerful people. Next we have is Ergatocracy. Well, it is a government by the workers or working class. The people in power are the ones who do the most work in creating goods. So this form of government basically gives importance to the workers and the working class, because these working class and the people in power are the one who do the most working in creating goods, and therefore if the government is formed by such people, then obviously according to this form of government the importance would be given to all the workers and the working class. Ergatocracy एक ऐसी सरकार है जो सरकार वर्कर्स की है, काम वालों की है, और सारी जो वर्किंग क्लास है उनकी है। ये सरकार उनकी इसलिए है क्योंकि यही जो लोग हैं ये जानते हैं कि वर्क क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही जो लोग हैं ये बहुत से गुड्स को क्रिएट करते हैं। जो वर्किंग क्लास होती है एक ऐसी क्लास होती है जो बहुत काम करती है किसी भी सोसाइटी या फिर स्टेट के लिए, लेकिन अंत में उनको कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। और इसीलिए एक ऐसी सरकार होती है जहाँ पर वर्कर्स लोगों को इम्पोर्टेंस मिलता है, वर्कर्स लोग ये सरकार चलाते हैं, और वर्किंग क्लास को इम्पोर्टेंट तवज्जो दिया गया है। और ऐसे पीपल जो पावर में होते हैं, जो वर्कर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जानते हैं कि गुड्स कैसे क्रिएट करते हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये मार्केट में होना क्यों इम्पोर्टेंट है। और अगर ऐसी सरकार बनती है जो कि वर्कर्स लोगों की होती है, तो उनको सारी जो चीज़ें, उनके जो राइट्स है, उनके जो इम्पोर्टेंस हैं मिल सकते हैं। और इसीलिए ये फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है ये वर्कर्स और वर्किंग क्लास का है। और यहाँ पर जो पीपल है, जो लोग हैं, जो पावर में हैं, ये जानते हैं कि वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है और चीज़ें बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए। सो दिस फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट revolves around the workers and the working class. And the last very important form of a government we have is Geroutocracy. Well, it is a government by the aged people. Only the oldest citizens have the say in how the government is run, because they have the most life experience. It's obvious that this form of a government is formed by the aged people of the society. Only the oldest citizens have the say as far as how the government is going to run, how the government is going to rule, and it's all because these people have the most life experience, and therefore this form of government is controlled and governed by the old people या फिर aged people. So जेरोटोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जहाँ पर ये सरकार बुजुर्ग लोग बनाते हैं। इस सरकार में जो बहुत एज ओल्ड पीपल है उनको अधिकार है, और जो ओल्डेस्ट सिटीजन्स होते हैं या फिर हम उनको कहेंगे कि बुजुर्ग लोग, यही सरकार बना सकते हैं। और ये सरकार क्यों बना सकते हैं? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि लाइफ क्या चीज़ है, सरकार कैसे चलनी चाहिए, और सरकार के फंक्शंस क्या होने चाहिए। और ये जो सरकार बनती है ये उनके हिसाब से बनती है, क्योंकि उनके पास वो एज ओल्ड एक्सपीरियंस होता है। और therefore this form of a government is by the aged people, and only oldest citizens have the say in as far as how the government will run, and this is all becomes because of they have the most life experience. So this is all about the third part of the form of a government, and in this third part we have discussed about oligarchy, republic, meritocracy, diarchy, ergatocracy, and geroutocracy. So I hope you have understood this form of the government. So I will see you soon in the next tutorial.
Till then, take care.